Good morning, students. I hope you all are doing well at your places and you all are studying well. Apart from that, you also taking care of your good health. So let's just begin with this chapter, that is the wise teacher and the jar. The title of our chapter is the wise teacher and of course the jar. Jar we all know jars जिसके अंदर कभी कभी हम लोग की मम्मी pickles वगैरह रख लेती. Let's just so about this chapter, इस chapter के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter, you will read a story in which there is a wise teacher who is in the class with the same of his students. जो क्लास में है अपने बच्चों के साथ, right? Show some experiments to the students. बच्चों को experiments भी दिखाती हैं, right? And जो teacher है, she is doing experiment with the jar in his hands and some liquid material that he dissolves in the water. Actually, she is holding a jar जिसके अंदर वो कुछ material है लिक्विड्स में और जार के अंदर क्या कर रही है शी इज जस्ट सॉल्विंग इट राइट so we let's just read this chapter and find out more what is about the jar and of course about the tea. So there was once a wise teacher. एक बहुत समय की बात है. There was once a wise teacher. एक बहुत ही ज्यादा kind teacher है whose words of wisdom students welcome from far and wide. Actually she used to speak very good words. बहुत ही ज्यादा अच्छे words बोलती हैं. वो बहुत दूर दूर से बच्चों को उसके पास अट्रैक्ट कर लेते हैं राइट. वन डे एज यूजुअल मेनी स्टूडेंट्स दे बिगैन गैदरिंग इन दी टीचिंग रूम में बच्चे क्या है गैदर होने लग गए राइट. एंड दे केम और वो लोग आए and just sat down quickly. They just came inside and sat down quietly. आराम से बैठ गए looking at the front with keen participation कि वो front में बैठ के participate करेंगे ready to hear what the teacher is about to say. Yes, what the teacher had to say कि teacher क्या बोलने वाली है. Eventually, means slowly, the teacher came in and sat down in front of the students. Eventually, teacher आई और वो बैठ गई आराम से. The room was very quiet that could not hear a pin drop. मतलब रूम इतना ज्यादा शांत था that they could hear a pin drop कि मतलब अगर एक सुई भी नीचे गिर जाएगी तो उसकी आवाज भी आ जाएगी. The room was that much quiet, right? And on one side of the teacher was a large glass jar. और टीचर के एक साइड पे क्या था एक बहुत ही बड़ा कांच का जार था right. And on the other side there was a pile of golf balls. और दूसरी साइड में क्या था गोल्फ की बॉल्स. गोल्फ इज अ गेम जो छोटी सी बॉल होती है वी हैव टू पुट इट ऑन दी hole that is inside the hole. And without saying a word the teacher began to pick up the golf ball. Teacher जो है she was just beginning without speaking, without uttering a single word, she started picking up the balls one by one and placed them all carefully in the glass jar. और उसने ग्लास के जार में क्या रख दिया बहुत ही आराम से उसको रख दिया. And plonk plonk आवाज आने लग गई right. When all the balls, जब सारी की सारी balls they were in the jar, the teacher turned to the student and asked, "Is this the jar is full?" जब बहुत सारी balls उसने डाल दी ऊपर तक, then teacher was asking the student, क्या ये jar बिल्कुल full है? Yes, said the students, and yes, the teacher, the jar is full. बच्चों ने कहा yes और teacher also said कि yes, jar कैसा है एकदम full. Now, without saying a word, the teacher began to drop small round pink pebbles. अब कुछ भी बोले बिना टीचर जो है small pink pebbles, छोटे छोटे पत्थर पिंक कलर के उसके अंदर डालने लग गई and carefully into the large glass jar so that they fell down between the balls. और उसकी आवाज कहने आने आने लगी क्लिक क्लिक राइट. बिना कुछ बोले टीचर उसके अंदर पेबल्स डालने लग गई. अब जो कुछ स्पेसेस बची हैं सपोज दिस इज अ जार. अगर ये जार है और इसके अंदर ऐसे हमने बॉल्स डाली है राइट. देयर सम गैप्स, कुछ कुछ गैप होते हैं तो यहाँ पे वो छोटे छोटे से पत्थर वो डालने लगी साथ में राइट. नाउ क्लिक क्लिक आवाज आने लगी. नाउ क्लिक clickety click when all जब सारे के सारे pebbles were in the jar the teacher turned the students बच्चों की तरफ टर्न किया and दोबारा पूछने लगी कि is this the jar is full. क्या अब ये जार पूरा हो चुका है क्या पूरा भर चुका है. The students just look at one another and then some of them started just nodding and saying. Nodding means they were just started thinking. वो सोचने लगे कि yes, yes teacher the jar is now full. अब टीचर को क्या बोलने लगे कि yes jar कैसा हो चुका है एकदम full. Now you can see that how the pebbles are placed and how the golf balls they are placed right. Now without saying a word अब कुछ भी बोले बिना when the teacher took some fine silver sand and let it trickle down with a gentle sigh sound
इन दी लार्ज ग्लास जार पुश। अब बिना कुछ बोले टीचर ने एक सैंड ले ली है, राइट। टीचर ने कुछ सिल्वर सैंड ले ली है, चमकती हुई सैंड जो कि ग्रे कलर में है, उसको अब जार के अंदर डाल रहे हैं। और जहां पे आवाज कैसे आ रही है, वुश। नाउ वेयर इट सेटल अराउंड दी पिंक पेबल्स, पेबल्स के बीच में वो क्या हो गई, सेटल हो गई, और गोल्फ बॉल्स के बीच में भी वो सेटल हो गई, राइट। नाउ व्हेन ऑल द सैंड वाज इन द जार, जब सारा का सारा चीजें जार में आ गई, सैंड भी, पेबल्स भी, गोल्फ भी, नाउ अगेन द टीचर टर्न टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क, इज दिस द जार फुल? Again she is asking कि क्या jar full है? Now again the students, they were not so confident. अब वो बिल्कुल भी ज्यादा confident नहीं थे this time, because the sand had clearly filled up all the spaces in the jar. So a few still nodded. अब लोग फिर से उनको थोड़ा बहुत डाउट होने लगा, although उस रेत से सब कुछ एकदम भरा हुआ था, and still nodded and said yes the teacher, the jar is now full. jar कैसा है? Now it's now full, अब बिल्कुल full हो चुका है, now it's completely filled. Now what happened? Without saying a word, the teacher took a jar of water and poured it carefully without splashing a drop into the large glass jar. Glog glog. Now what happened? Without saying a word, कुछ भी बोले बिना, जो टीचर है, she took a jar of water, एक वाटर का जार ले लिया, and poured it carefully, और वापस उसमें पलटने लगी, without splashing a drop, एक भी ड्रॉप नीचे ना गिर जाए, into the glass jar, glog glog, कि एक भी बूंद उसके अंदर ना गिर जाए. Now what happened? Now when the water reached the brim, अब जब water उस brim पे आ गया, मतलब बिल्कुल ऊपर तक आ गया, the teacher turned to the student and asked, is this jar full now? क्या अब ये पूरा भरा हुआ है? Most of the students, they were silent, but 2 or 3 ventured to answer. Ventured means they just हिम्मत करके, they were dare to answer. Yes teacher, the jar is now full, and now it is. अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्या है, full है. Now again, without saying a word, the teacher took a handful of salt and sprinkled it slowly over the drop of the water with a quiet wishing sound. Now the teacher, she just sprinkle, उसने नमक छिड़क दिया किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है ना, एंड विद अ वेरी क्वाइट विशिंग साउंड, बहुत ही ज्यादा साइलेंट आवाज आ रही है, विश. नाउ व्हेन ऑल द सॉल्ट हैड डिसॉल्व्ड, अब सॉल्ट तो क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, एंड द टीचर अगेन टर्न टू द स्टूडेंट एंड आस्क्ड, इज दिस द जार फुल नाउ? क्या अब जार फुल है? नाउ द स्टूडेंट्स वर टोटली साइलेंट. अब बच्चे कैसे हो गए, बिल्कुल चुप हो गए. दे वर जस्ट, मतलब दे वर इन डाउट कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज. इवेंचुअली वन ब्रेव स्टूडेंट सेड, एक बच्चे ने कहा, क्या क्या कहा, यस टीचर द जार इज फुल नाउ. यस टीचर, की जार बिल्कुल भर चुका है. यस सेड द टीचर, द जार इज नाउ फुल, की जार कैसा है, बिल्कुल फुल हो चुका है. नाउ the teacher then said, a story always have many meanings and you will each have understood many things from this demonstration. अब हर एक स्टोरी के कोई ना कोई पहलू होते हैं, एंड एज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल्स, एंड कोई भी चीज को जब आप एक्टिविटी से समझाते हैं, whenever you are explaining something with the help of an activity, that showing is known as demonstration. So they discuss quietly among yourselves, खुद से हम डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट मीनिंग्स मीन्स द स्टोरी फॉर यू, कि आपके लिए उस स्टोरी का क्या मायने रखता है, एंड हाउ मेनी डिफरेंट मैसेजेस कैन यू फाइंड इट एंड यू कैन टेक फ्रॉम इट, कि आप उससे कितने मैसेजेस ले सकते हैं और क्या क्या हासिल कर सकते हैं. नाउ द स्टूडेंट, दे जस्ट लुक एट द वाइज टीचर, उन्होंने वाइज टीचर को देखा, एट द ब्यूटीफुल ग्लास जार, देखा कि ब्यूटीफुल ग्लास जार जो है, इट इज फिल्ड विद गोल्फ बॉल्स भी हैं उसके अंदर, पिंक पेबल्स भी हैं, सिल्वर सैंड भी है, पानी भी है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है, सॉल्ट भी है, एंड दे देन क्वाइटली डिस्कस्ड विद वन अनदर द मीनिंग्स द स्टोरी हैड फॉर देम, कि क्या है स्टोरी का मीनिंग उन लोगों के लिए. नाउ आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द वाइज टीचर raised one hand and the room felt silent. जैसे टीचर ने एकदम, एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो at that time teacher was totally silent. Now said the teacher, I want you to recognize that this jar, कि ये जो jar है, represents your life. This jar basically represents your life. जो golf balls हैं, they are the important thing. गोल्फ बॉल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, और वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ और हमारी
favorite passions कि हमें क्या क्या करना है, right? Things that if everything else were lost, only they remained, then at that time also your life would still be full. अगर बहुत ही ज्यादा luxury चीजें आपकी लाइफ से निकल जाएं, and if you are having your family, your friends, your health and your favorite passions, that means that your life is totally filled. पिंक पेबल्स, अदर थिंग्स दैट मैटर लाइक योर जॉब, योर हाउस, योर कार, ये जो पिंक पेबल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब क्या दर्शाती हैं कि वो आपकी जॉब है, आपकी कार है, राइट, योर हाउस, दीज ऑल थिंग्स दे इंडिकेट, राइट? नाउ द सिल्वर सैंड इज एवरीथिंग एल्स, और सिल्वर सैंड क्या है? वो सब चीजें जो बिल्कुल बिल्कुल बाद में आती हैं, दैट इज द स्मॉल स्टफ। इफ यू पुट द सैंड इनटू द जार फर्स्ट, अगर आप इस जार के अंदर सबसे पहले सैंड को डाल देते, देन ही कंटिन्यूड दैट देयर इज नो रूम, मींस देयर इज नो स्पेस फॉर द पेबल्स एंड द गोल्फ बॉल्स। अगर आप इन बकवास चीजों को पहले डाल देते, अगर आप इस स्मॉल स्टफ को डाल देते, दैट इज सैंड को डाल देते, तो उन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो सैंड सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेती। अब तो सैंड जो है, it is settled between the pebbles, settles between the golf balls. Now the same goes for life. Similarly, life goes. And if you spend all your time and energy on those small stuff, then you will have never have space for the things that are important to you. जिन अगर आप बेवकूफों वाली चीजें में, if you will just spend your energy on all those unnecessary things that you at that time you will never be able to achieve, you will never be able to have a room for all those things that are very much vital, necessary for your life, right? Pay attention to the things that are critical to your happiness. Please stay focused on those things that gives you happiness from inside. Play with your children, बच्चों के साथ खेलिए, take your time to get the medical checkups because they are very important, because nowadays our parents, they were becoming careless day by day for their health. They do not take care of health, but it's very important that you should have a checkup, a routine checkup at least after 3 months or maximum 6 months, but not more than that. Take your partner to out to the dinner, आप अपने partner के साथ घूमने जाइए. There is always a time to clean the house and fix the rubbish. हमेशा घर का काम तो चलता ही रहेगा. The only thing is important that you just take care of your health. Please take care of the golf ball first. Golf की balls का सबसे पहले ख्याल रखिए. That really matters. हमारे family, हमारे friends, हमारे siblings, हमारी health, हमारे passions. These all things that are very important. Set your priority. Rest is just your sand. बाकी की बची हुई चीजें क्या हैं? वो just रेत हैं, जिनको अगर आप एक टाइम पे सेटल ना भी करें तो चलेगा, राइट? So one of my student raised her hand and inquired, then what does the water represent? पानी क्या represent करता है? The teacher smiled. I am glad. I am so much happy that you dare to ask me. It shows that no matter how full your life, कितनी भी आपकी लाइफ भरी हुई हो, may seem there is always room for fun. कभी ना कभी, कितनी भी लाइफ डिस्टर्ब हो, कितनी भी लाइफ में क्या भी चल रहा हो, बट कभी ना कभी फन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this chapter was actually a very I found it very interesting, as this chapter basically teaches us that we should take care of our family, our health, our siblings, our passions, because these things, they represent the golf balls, because they are very important. And if you are physically fit, if you are taking care of your health, apart from that, if you are taking care of your parents, that this is very important, and apart from that, all the things are secondary, right? So please take care of your health. That is why in the beginning I always used to say that please take care of your health, because if you are not healthy, you won't be able to study well for your exam. So please stay blessed and take good care of your health, and always stay hydrated and keep smiling. Thank you.